Hello bachcho, let's read the question. The question says name the cells that act as HIV factory in humans when infected by HIV. Explain the events that occur in these infected cells. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ द HIV वायरस और द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो HIV एक रेट्रोवायरस है, यानी कि it has RNA at its genetic material. So it has a RNA genome. और ये responsible है for causing the disease AIDS, which stands for acquired immunodeficiency syndrome. तो इस बीमारी में एक इंसान का इम्यून सिस्टम ग्रेजुअली वीकेंड या कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. So this is associated with the weakening of the immune response. और इसी वजह से एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो इन्फेक्शंस को इजीली ओवरकम कर सकता है, a person infected with HIV cannot overcome those infection and it takes a serious turn. तो ऐसा क्यों होता है? तो HIV infects the immune cells और मैक्रोफाजेस को कहा जाता है the HIV factory. So macrophages are the HIV factories. This is because ये वायरस proliferate करता है inside the macrophages. तो macrophages क्या है? It is a kind of a white blood cell. Kind of a white blood cell जो कि मदद करता है in the detection and killing of the pathogen. So it functions in the detection and phagocytosis or engulfment of pathogen. और इसी तरह it helps in triggering an immune response. It triggers an immune response. तो अब हम देखेंगे the steps which are involved in the life cycle of a HIV virus जब वो एक macrophage को infect करता है. So first let us draw a macrophage cell. तो ये है the plasma membrane of the host. This is the cytoplasm and यहाँ पे we have the nucleus with DNA as the genetic material. So it is the DNA of the host. ये है हमारा HIV virus. This is the viral coat or the capsid protein which surrounds the genetic material of the virus, which is the RNA. तो since HIV एक retrovirus है, it has a RNA genome. तो पहला स्टेप होगा the attachment of the virus to the macrophage cell. तो ये वायरस जाके अटैच करता है to the macrophage. This step is called the attachment step. Next step में it would inject
its genetic material into the host. So now the RNA enters into the macrophage cytoplasm. अब आता है एक की स्टेप जहां पे this RNA is converted into DNA और ये प्रोसेस कैटेलाइज्ड होता है with the help of the enzyme reverse transcriptase. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है which converts RNA into DNA. Next step में this DNA would enter into the nucleus and become a part of the host DNA. So ये हमारा host का genetic material था and this is our viral DNA integrated into the host genome. तो अब ये वायरस होस्ट की सेलुलर मशीनरी की मदद से वुड रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब. सो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इट वुड अगेन प्रोड्यूस न्यू वायरल आरएनए मॉलिक्यूल्स. तो ये है हमारा न्यू वायरल आरएनए. तो इनमें से कुछ RNA would become the genetic material of the new virion particles और कुछ RNA translate होके produce करेंगे the necessary viral protein. So ultimately it would lead to the formation of fresh HIV virus जो कि इन सेल्स को लाइस करके बाहर आएगा. So now they move out of this macrophage cell and they would infect fresh macrophage cell. So इस स्टेप को कहा जाता है the release of new virions. तो ये साइकिल रिपीट होता रहेगा where the HIV would infect a macrophage, complete its life cycle, produce new virion particles and reinfect fresh macrophages. और इसी वजह से the number of healthy macrophages within the host will keep on falling and the immune system of the person will get compromised. Hope you understood it well. Best of luck.